Standard 7th Maths, Chapter 11, Circle, Practice Set 42. Complete the table below. So, first see, we are learning circle. So, in circle, what you know, this is the center from where we draw a circle. So, from center to the circle, this is a radius. So, formula for radius is radius is always given with the help of which we draw a circle. Now, if we draw double of radius, means this is also radius and this is also radius, it becomes diameter. Diameter is a segment which includes center in it. जब रेडियस का डबल होता है तो वो डायमीटर होता है. So that means 2 into radius is equals to diameter. And new thing that you are going to learn is circumference. What is circumference? See, this is a wire. When you turn this wire, it becomes a circle. So, in short, the length of this wire is said to be circumference. Okay. So, a boundary. So, here radius is given and you have to find out diameter. So, to find out diameter is equals to 2r, that means 2 into radius. So, radius is given 7 centimeter. So, 2 sevens are 14. So, that means 14 centimeter diameter. Circumference. So, formula of circumference is 2 pi r or pi d. If you have diameter, you can use this formula. If you have radius, you can use this formula. So, let's see, we use pi d. So, circumference is equals to pi. Pi is a symbol which has fixed value. Pi का एक fixed value होता है 22/7 or 3.14. Okay. So, here we will use 22/7 into d. Diameter is 14. 7 ones are 7, 7 twos are 14. 2 twos are 4, 2 twos are 4. So, circumference is equals to 44 centimeter. See, the same thing if you would have used this formula, अगर आप ये formula use करते तो भी आंसर सेम आता. 2 into 22/7 into radius. Radius is what? 7. 7 ones are 7, 7 ones are 7. See, 2 twos are 4, 2 twos are 4. 44 centimeter. So, it is up to you. आप लोगों के ऊपर है कौन सा formula use करना है. Now, second sums, here they have given us diameter. So, what will be the radius? Radius diameter का half होता है, आधा होता है. So, what we will do? Radius is equals to diameter upon 2. Okay, half होता है ना. So, diameter is 28/2. So, 2 ones are 2. 2 ones are 2, ये divide कर रहे हैं हम. 2 fours are 8, that is equals to 14 centimeter. So, here radius is 14 centimeter. Now, circumference. You have both radius and diameter. So, whichever you find easy, use that formula. So, here 22/7 into diameter 28. 7 7 fours are 28. 4 twos are 8. 4 twos are 8. So, that is 88 centimeter. Now, third sums. In third sums, you have been given circumference already. यहाँ already circumference दिया है. With the help of circumference, we have to find out radius and diameter. So, let's see if we use
pi d. So how will be the sums? See, circumference is already given 616 and pi is 22/7 into d. d नहीं है हमारे पास. So to find out this d, ये यहाँ पे आएगा from right hand side to left hand side. तो when this symbol will come toward left hand side, ये reciprocal हो जाएगा 616 into उल्टा हो जाएगा 7/22. फिर ये इक्वल टू और यहाँ पे रह गया डायमीटर. नाउ ये 11 का टेबल है. 11 2s are 22 एंड यहाँ पे सी 61 नो. सो 11 5s are 55. 61 में से 55 गया 6 बचा. सो ये बन गया 66. सो 11 6s are 66. नाउ 2 1s are 2. वो सेम टेबल से 2 2s are 4. 1 बचा. 2 8s are 16. So 28 into 7. 7 8s are 56. 5 7 2s are 14 plus 5 19. So 196. So here we got diameter equals to 196 centimeter. So radius is what? Radius is equals to half of diameter. So 196 upon 2. So 2 1s are 2. 2 9s are 18. So 19 में से 18 गया 1 बचा. 2 8s are 16. So radius is equal to 98 centimeter. Let's see fourth sums. Here circumference is already given 72.6 centimeter. Again we have to find out diameter and radius. So circumference is equals to pi d. So here we have 72.6 equals to 22/7 into d. So to find out d ढूंढने के लिए इसको यहाँ पे लेके जाएंगे. So 72.6 into 7/22. So now let's see the cancellation. Here now this is table of 11. 11 2s are 22 and here see 11 6s are 66. 72 में से 66 गया. So 6 बचा. So this decimal and then 11. अभी भी 11 का cancellation बाकी है. So 11 6s are 66. Then again 2 1s are 2. 2 3s are 6. Decimal 2 3s are 6. Now diameter is equals to 7 3s are 21. 2 carry. 7 3s are 21. 22. So that is 22.1. Sorry, 7 3s are 21. 2 carry. No, then again 7 3s are 21. 22 23. So here 23.1. So this is our diameter. So this is our diameter 23.1 centimeter. So now radius is what? Half of. Radius is half of diameter. So half करेंगे तो 2 1s are 2. 2 1s are 2. Again 2 1s are 2. इसका 1 यहाँ पे आया. ये डेसिमल आया. 2 5s are 10. 11 में से 10 minus 1 remaining. Again 2 5s are 10. So radius is 11.55 centimeter. Second question, if the circumference of a circle is 176 centimeter, find its radius. So solution,
circumference formula is equals to 2 pi r. 2 pi r. So therefore you already have circumference, so that is 176 centimeter equals to 2 into pi. Pi you know 22 upon 7 into रेडियस. ओके, यहाँ पे ये फॉर्मूला इसलिए ले रहे बिकॉज दे हैव आस्क्ड अस रेडियस. अगर डायमीटर पूछते तो डायरेक्ट पाई डी लेते. सो नाउ टू फाइंड आउट दिस रेडियस वी विल टेक ऑल दिस ओवर दिस साइड. राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा. सो रेडियस इज इक्वल्स टू 176 इंटू ये जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, एंड वॉट एवर इज देयर इन न्यूमरेटर दैट विल बी इन डिनोमिनेटर. नाउ अगेन टेबल ऑफ 11. 11 2s are 22 and here see 17 no. So first 11 1s are 11, 17 में से 11 गया 6 बचा, so this became 66. So 11 6s are 66. Now 2 1s are 2, 2 8s are, then again 2 1s are 2, 2 4s are, so 4 7s are. यहाँ multiplication है, 4 7s are 28 centimeter. So what they have asked, find its radius. So the radius of a circle is 28 centimeter. Third sums, the radius of a circular garden is 56 meter. What would it cost to put a 4-round fence around this garden at a rate of 40 rupees per meter? Now what they are saying over here, that there is a circular garden, a ground is circular. ओके, वो सर्कुलर ग्राउंड का रेडियस इज़ हाउ मच 56 मीटर. अब यहाँ पे फेंसिंग, आपने गार्डन देखे होंगे जिसमें से तार लगे हुए रहते हैं ऐसे. सो दिस इज सेट टू बी फेंसिंग यानी बाउंड्री, ताकि नोबडी शुड एंटर दिस गार्डन. सो 4 राउंड ऑफ फेंसिंग का वायर लेना है. सो वो वायर का टोटल कॉस्ट कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. और कितना लंबा वायर लेना पड़ेगा, हाउ मच लॉन्ग वायर वी हैव टू बाय एंड एट व्हाट कॉस्ट. सो फर्स्ट we will find out circumference of a circle. So here to find out circumference of a circular ground, so here we will say circle, that is 2 pi r. So 2 into pi is 22 upon 7 into r is 56. Here they have given us, so 7 1s are 7, 7 8s are 56. That will be equals to 2 into 22 44 and 44 into 8. 4 8s are 32, 4 8s are 32 plus 3 35. So that is 352 meter. What is this? This is circumference. Now सर्कमफ्रेंस मतलब क्या हुआ, ये सर्कल का एक राउंड हुआ. हमको वी हैव टू फाइंड आउट 4 राउंड्स लेंथ, 4 राउंड लंबा वायर लेना है. सो टोटल लेंथ ऑफ fencing will be 352 into 4. That will be equals to 4 2s are 8, 4 5s are 20, 2 carry, 4 3s are 12, 13, 14. So 1408
मीटर लेंथ, इतना लंबा वायर लेना है। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज़ 40 रुपीज़। 1 मीटर लंबी वायर का कॉस्ट 40 रुपीज़ है। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टोटल लेंथ? सो कॉस्ट of 1408 meter of wire will be 1408 into 40 rupees. So 0 will be already there. Then 4 8 are 32, 3 4 4 are 16, 1 carry, 4 1 are 4, 5. If you cannot multiply orally, you can go in this old method like this. Okay. Yeah. So cost is rupees. The cost is rupees 56,320. This is end. Fourth sums. The wheel of a bullock cart has a diameter of 1.4 meter. How many rotations will the wheel complete as the cart travels 1.1 kilometer? Now here what they are saying, a bullock cart एक बैलगाड़ी है, तो उसकी जो चक्का है ना व्हील, ये जो बैलगाड़ी का चक्का है उसका डायमीटर दिया है 1.14 मीटर। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, ये जो बैलगाड़ी का चक्का है वो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कुछ 1.1 किलोमीटर, उतना डिस्टेंस कवर करने में ये जो बैलगाड़ी का चक्का है, दिस व्हील, हाउ मेनी टाइम मस्ट हैव इट रोटेटेड to cover this distance? So number of rotation we have to find out. So how we will come to know that? If we find out one rotation and that will get divided with this, so we will find out this. Let's see how to solve. So let the wheel complete x numbers of rotation. जो हमको ढूंढना है ना उसको x ले लेंगे कि समझो व्हील ने x बार रोटेशन किए, गोल घुमा है। देन नाउ सो ये डिस्टेंस, ये कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट? एक सरकमफ्रेंस यानी एक राउंड ऑफ सर्कल, वो जो व्हील का एक राउंड है इनटू जितने बार नंबर ऑफ रोटेशन, जितने बार वो घूम रहा है। सो देयरफॉर वी हैव डिस्टेंस 1.1 किलोमीटर एंड फॉर सर्कमफ्रेंस हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है। सो वी विल टेक डायमीटर फॉर्मूला पाई डी इंटू नंबर ऑफ रोटेशन इज एक्स। सो देयरफॉर 1.1 किलोमीटर इक्वल्स टू 22/7 पाई का वैल्यू इंटू डायमीटर, डायमीटर इज हाउ मच? 1.4 meter and into this x. So to find out this x, all this we will take toward this side. So 1.1 ये सब यहाँ आ जाएगा. So जो नीचे है that will goes up 7 and this 2 will come in bottom over here equals to x. So now see this is, if we take this as a 11, so पहले 0 लेंगे और फिर डेसिमल लेंगे. So we can do one more thing. यहाँ पे भी 0.1 के पहले डेसिमल है वो गया, ये भी 0.1 के पहले डेसिमल है तो चला गया. So that अभी ये सिर्फ 11 बना क्योंकि दोनों डेसिमल
एक नंबर के पहले है तो डेसिमल डेसिमल कैंसल. नाउ दिस बिकम 11 and this is 22. So 11 ones are 11, 11 twos are 22, 7 ones are 7, 7 twos are 14. So now we have left with 1. Upper side is 1 kilometer upon 2 into 2, 2 into 2, this is meter. So now this equals to x. So this 1 kilometer, नीचे मीटर है ऊपर किलोमीटर है. So किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. So therefore ये जो 1 किलोमीटर है वो बन जाएगा 1000 मीटर अपॉन जो 2 into 2 मीटर बचा है. सो मीटर मीटर कैंसल. 2 ones are 2, 2 5s are 10, double 0. Then again 2 ones are 2, 2 2s are 4, 1 carry, 2 5s are 10, 0 equals to x. So therefore x is equals to 250 rotations. So that means the wheel completes 250 rotations. Done.